Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue the remaining part of grammar lesson 1, which is parts of speech, and today we are going to discuss verbs, adjectives and adverbs. Verb. A verb is a word which expresses an action. Students, what is a verb? Verb is a word or part of speech which expresses an action. Verb वो word होता है जो कि action को show करता है. अब action क्या होता है students? देखें, fish live in water. She speaks slowly. Live and speaks, these both words are verbs. Okay, action जिसमें आप कोई effort लगाते हो, जिसमें आपकी energy सर्व होती है, जिसमें आप कोई काम कर रहे होते हो या करते हो, इसको क्या बोलते हैं? Verb. Students, look at here. There are few images, okay, that show verb. The girl draws, hops, jumps, reads, writes, dances, dives and swims. इन सारे इमेजेस में ये बच्ची किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है. तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वर्ब की. जो वर्ब्स की मेन टू कैटेगरीज होती हैं या काइंड्स होते हैं. First is main verb and second is auxiliary verb. Main verbs, she works hard and he plays cricket. Works and plays both are main verb. अब main verbs क्या होते हैं? Main verb एक्चुअली पूरे सेंटेंस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं. ये मेन एक्शन होता है जिसपे पूरा सेंटेंस क्या है, रिवॉल्व करता है. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इनका काम जो होता है वो जो एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स हैं इनको असिस्ट कर रहे होते हैं, इनकी हेल्प कर रहे होते हैं. Like the girl is playing with her toys is an auxiliary verb and is helping main verb. Main verb यहाँ पे क्या है? Playing है. Likewise in second example, I have completed my task. Have is auxiliary verb and completed is main verb. यहाँ पे have जो है actually help कर रहा है किसकी? Completed main verb की. So auxiliary verbs help main verbs and main verbs are the main action of the sentence. Now student, let's discuss verb forms. I think you have a little bit idea there which are the main forms of verb. Okay, base form means first form of the verb, past form, second form of the verb, past participle, third form of the verb, and present participle, fourth form of the verb. Do, did, done, doing, have, had, having, cut, cutting. आपने देखा होगा फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है तीनों डिफरेंट है. सेकंड एग्जांपल में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है. इसी तरह थर्ड एग्जांपल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म जो है सेम है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम ing लगा लेते हैं. ठीक है. तो वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है जिसमें कुछ में तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, कुछ में तीनों सेम होती हैं और कुछ में सेकंड और थर्ड सेम होती हैं. तो ये वर्ब की फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंसेस में आपको सिर्फ वर्ब की फॉर्म से काम आएंगी. Like I always do my work, present. I did my work, past form. I have just done my work, past participle. I am doing my work, present participle. An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Adjective वो word होता है जो किसी भी noun या pronoun को qualify करता है, उनकी state या condition बताता है, उनकी quality बताता है. Examples: the fisherman caught a big fish. Fish is a noun and big is adjective. She bought a gold ring. Ring is a noun and gold is its quality. She is intelligent. Intelligent is adjective and she is pronoun. So these examples show that an adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Here are some images of adjectives. Okay. Ashamed. Ashamed means शर्मिंदगी feel करना. Irritated. Irritated means तंग आ जाना किसी भी चीज से. Hopeless. Hopeless means उम्मीद का खत्म हो जाना. And worried. Worried means परेशान हो जाना किसी भी चीज के लिए. Students, now you must know that what is the exact position of adjectives in a sentence. First condition is before nouns. You have to put adjectives before nouns. Like he has a red car. Car is noun and red is adjective. He fell from a tall tree. Tree is noun and tall is adjective. Second condition is after linking verbs. The children are happy. Happy adjective and before happy are linking verb. This tower is majestic. Majestic means very huge or shandar. Majestic is adjective and before
adjective we have put linking verbs. Is, are, am, was, were, they are called linking verbs. Okay, so we use adjectives after linking verbs and we use adjectives before nouns. These are the two positions of adjectives in a sentence. Next part of speech is adverbs. An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. Actually adverbs qualifies three things. First is verb, second is adjective और third is another adverb. Okay, example, he runs fast, she went hastily. एडवर्ब्स जो हैं एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते थे, इसी तरह एडवर्ब्स जो हैं एक वर्ब को एक एडजेक्टिव या अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उनको डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देता है. एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब. जो डेफिनेशन उससे हमें पता चल गया था कि एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जांपल, शी स्पीक्स स्लोली. स्पीक्स इज वर्ब एंड स्लोली इज एडवर्ब. Here an adverb describes verb. Second, an adjective. An adverb describes an adjective. This is very good. Good is adjective and very is adverb. Here adverb describes an adjective. Third, an adverb describes another adverb. She eats extremely slowly. Extremely is adverb. Slowly is also adverb. Here one adverb describes another adverb. So these are the three conditions of adverb where you can put in an adverb in a sentence. So these are the position of an adverb in a sentence. Okay, after verb, before adjective, or after or before another adverb. So students, I hope this lecture will prove fruitful for you, and thank you so much till the next lecture.